Jai Sri Swaminarayan. S.S.G.M School Cbse runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankowa hardly welcomes you to this online education platform. Students of class 9, today we are going to learn a new chapter in our English subject, that is chapter number 3, The Little Girl. So first of all, I will give you an introduction of this chapter. So the title of the chapter, The Little Girl, refers to the main character of this chapter that is come across from the story, that is Kezia. Okay, so the main character of this chapter is Kezia, that will come across in this chapter. The theme of this chapter is the relationship between children and their parents. And the writer of this chapter, Catherine Mansfield, wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. So from this story, we are going to learn about the relationship of the children and their parents. So when we are very small, when we are very younger, we feel that our parents will not love us, okay? वो हमें प्यार नहीं करते, because some of the action of them feels unjustified to us. हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो हमारे साथ अनजस्टिफाई, वो हमसे प्यार नहीं करते. But besides this, they love us a lot. So from this story, we are going to discuss about the relationship of the parents and their children. So let us read the story. So do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. So do you feel that you are very young, when you were younger, you are confused of some of the action of their parents, and now at present you understand why they do this type of actions with us. So perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. So this story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. So what is the meaning of the word find an echo in every home? It means that this story is related to all of us. Yani ki you students, you all are related to this story. So let us start the reading. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. So what is the meaning of a word, a figure to be feared? It means a person to be feared. And who is the person in this story? The Kezia's father. Okay, so he means Kezia's father, who is a figure to be feared and avoided. So every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. So Kezia, उसके फादर कैसे थे? एक उनके लिए फिगर ऑफ फियर थे. ओके, सो एवरी मॉर्निंग before going to work, her father come in her room and give her a casual kiss, and gave her a casual kiss, to which she responds with goodbye, father. So there was a great sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down to the long road. So the feeling of relief, okay, relief means relaxation, when heard the noise of carriage. Carriage means vehicle, okay. So Kezia के father की जो vehicle थी वो growing fainter and fainter, it means going far and far away. So down to the long road, it means जब केजिया ये उसके पापा की जो vehicle थी उसको दूर जाते जाते सुनती थी तो वो कैसा feel करती थी? Feel relaxation. Okay, so in the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. So this shows us the fear of Kezia's towards his father. And we also look here that gave her a casual kiss means it suggests us the love towards her daughter Kezia of the father. So in the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. तो जब इवनिंग में उसके पापा वापस आते थे
तब वो कहाँ पर खड़ी होती थी? स्टेयरकेस, इट मीन्स कि जो स्टेयरकेस थी वहाँ पर, एंड हियर हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और वो सुनती थी उनके लाउड वॉइस को, बहुत ही बड़े वॉइस को, और उससे वो डरती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, hasn't the paper yet come yet? Mother, go and see if my paper's out there, and bring me my sleepers. So look, here we find that as he came to the home, he started ordering to her mother that bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Then go outside and watch there the paper is come or not. Okay, तो वो आते ही ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते थे कि मेरी चाय टी मेरे टेबल पे रखी दी जाए ड्राइंग रूम में, फिर न्यूज़पेपर देखो अगर बाहर आया हो तो उसे लेकर मेरे ड्राइंग रूम में रखो. सो केजिया मदर वुड कॉल टू हर, सो मदर Kezia's mother called her that if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. So Kezia's mother called her and tell her that if you are a good girl, then come down and take off father's boot. Slowly the girl would slip down the staircase, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. So केजिया को जैसे उसकी मदर ऑर्डर करती है वो स्लोली आती है और मोर स्लोली अक्रॉस द हॉल, हॉल में बहुत ही स्लोली आती है, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम. बट बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, by that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. तो उस समय उस दौरान जब वो उसके फादर ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं तो वो उनका लुक कैसा था कि स्पेक्टिकल्स जो उनकी चश्माएं थी वो उनके ऐसे पड़ी हुई थी. फिर लोग वो ऐसे देख रहे थे उस केजिया को जैसे कि वो टेरिफाइंग टू केजिया, ओके, टू द लिटिल गर्ल, उस लिटिल गर्ल को डर लगे, वो डर जाए, इस तरह से उसको देख रहे थे. सो Kezia hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? सो केजिया को क्या कहते हैं? हरी अप केजिया, जल्दी से आओ, एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. तो इस बूट को, जो शूज हैं उसको उतारो एंड बाहर रख दो जल्दी से. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या आप आज अच्छी गर्ल बन के रही थी? सो आई डोंट नो फादर. सो I don't know father, it means वो हिचकिचा रही थी, stammering, okay. So you don't know, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. So जैसे ही वो ऐसे हिचकिचा कर बोल रही थी तो उसके फादर ने उसकी कॉपी की और उसको बोला कि इफ़ यू स्टटर यानी कि स्टमर यानी कि दोहराना, ट्वाइसली बोलना, कोई बात में अटक अटक कर बोलना जिसको हम कहते हैं. सो उसके फादर क्या कहते हैं? इफ़ यू स्टटर्ड लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तो आपकी माता आपको कहाँ पर ले जाएंगी? डॉक्टर के पास ले जाएंगी. सो शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विथ फादर. सो गिवन इट अप यानी कि स्टॉप डूइंग इट, यानी कि वो दूसरे किसी भी लोग के साथ बोलते समय ऐसे स्टटर यानी कि हिचकिटाती नहीं थी, अटक अटक के नहीं बोलती थी, लेकिन इट इज ओनली विथ हिज फादर दैट ही स्टॉप डूइंग, ओके. तो उसकी जीभ अटकती थी, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. तो वो तभी इतनी ज्यादा क्या करती थी? कोशिश करती थी कि वो प्रॉपरली बोल सके. What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you told this child not to appear on the brink of suicide. Here Kezia carry my teacup back to the table carefully. So here the word wretched means unhappy. So Kezia's father told her that what's the matter? क्या हुआ है आपको? What are you looking so wretched about? Why are you looking so unhappy today? Okay, then वो अपने जो केजिया की मदर है उनको ऑर्डर देते हैं, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड.
Here the word on the brink of suicide means about to commit suicide. So उस दिन केजिया इस तरह से उसका लुकिंग था, उस तरह से वो लग रही थी कि जैसे वो सुसाइड करना चाहती हो, ठीक है, इतना अनहैप्पी दिख रही थी. इसीलिए केजिया के फादर उसकी मदर को ऑर्डर कहते हैं कि तुम इस चाइल्ड को बोल दो, इस चाइल्ड को सिखा दो कि अपने पापा के पास इस तरह से ना आए कि जैसे वो सुसाइड करना चाहती हो, ठीक है. सो हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और ऑर्डर देते हैं कि वो अपना टी कप है वो वहाँ से लेकर दूसरी जगह पर टेबल पर केयरफुली रख दे. सो ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, when he yawned, thinking about his alone was like thinking about a giant. So here the writer wants to describe about Kezia's father that he was so big, okay, his hands and his neck was so big, especially his mouth when he yawned, okay. So especially when he yawned यानी कि खांसी खाते हैं तब उनका माउथ बहुत ही बड़ा हो जाता है. So thinking about him alone was like thinking about a giant, okay. So on Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with his father and mother. So on Sunday यानी कि संडे को जो केजिया की ग्रैंड मदर थी यानी कि जो दादी थी, उन्होंने केजिया को अपने मदर और फादर के पास भेजा कुछ अच्छी बातें करने के लिए. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड that mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन हर बार क्या होता था, जैसे ही हर संडे को दोपहर को वो केजिया नीचे आती थी अपने मॉम डैड से बात करने के लिए, तो हर मदर वॉज रीडिंग ऑलवेज, ओके. सो उसकी मम्मी है वो हर बार कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी बुक्स, और उसके फादर थे वो सोफा के ऊपर, जो सोफा था उसके ऊपर सोए रहते थे. His handkerchief on his face, उसके फेस के ऊपर हैंकरचीफ रहती थी. His feet on one of the best cushion, यानी कि एकदम जो बढ़िया जो क्यूजिन था, जो तकिया था, उसके ऊपर उनके पैर रहते थे. Sleeping soundly and snoring, यानी कि बहुत शांति से सोया, snoring यानी कि खराटे खाते रहते थे. So she sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched. So केजिया क्या करती थी, वहाँ पर बैठी रहती थी शांति से एकदम, और उसके फादर को देखती रहती थी कि जैसे ही वो उठे और खड़े हो जाएं. एंड आस्क द टाइम, देन लुक्ड एट हर, ओके. सो डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल. सो व्हेन हर फादर वॉक अप, he told Kezia that don't stare too, यानी कि उसकी तरफ इस तरह से मत देखो, इस तरह से उसको मत झांको, क्योंकि तुम कैसी लग रही हो. You look like a little brown owl. owl यानी कि उल, जिसको हम कहते हैं उल, उसकी तरह आप दिख रहे हो. So one day when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. So one day what happened that Kezia was not well because of cold. So her grandmother suggested her that her father's birthday was upcoming. So you have to make a gift for your father, and that is why he suggests that she should make him a pin cushion, यानी कि एक बहुत अच्छा pin cushion बना देना चाहिए for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. So laboriously with a double cotton the little girl stitched 3 sides. So बहुत ही मेहनत करके केजिया ने क्या किया, जो क्यूजिन बना रही थी उसकी 3 साइड्स को स्टिच कर दिया. बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन उसके साथ उसके अंदर क्या अंदर फिल करा, ओके, स्टफ क्या करें, उसके लिए उसको सोचना पड़ रहा था, उसको कुछ मिल नहीं रहा था. सो दैट वाज द क्वेश्चन. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for a scrap. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into teeny pieces
and stuffed her kiss, then sewed up the fourth side. So वो हर जगह पर ढूंढ रही थी कि कुछ मिल जाए ऐसा कि वो जो क्यूजन था उसके अंदर भर सके. फिर वो अपने मदर की जो बेडरूम थी उसके अंदर गई, तो वहाँ पर उसको कुछ फाइन पेपर्स की सीट्स मिले, कुछ कागज़ मिले, तो उसको उसने उठा लिया और उसको काट कर उसके अंदर स्टफ कर दिया एंड फोर्थ साइड स्टिच कर दी. सो दैट नाइट देयर वाज अ ह्यूज एंड क्राई इन द हाउस. सो ह्यूज एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई, इट मीन्स एंग्री प्रोटेस्ट इन द house. Father's great speech for the port authority had been lost. So what is that? जो ये फाइन पेपर्स थे वो क्या थे? केजिया के फादर के एक स्पीच थी जो वो अथॉरिटी की जो मीटिंग होने वाली थी, ओके, पोर्ट अथॉरिटी की, उसके अंदर वो बोलने वाले थे, वो खो गई थी क्योंकि वो सब जो सीट्स थी वो क्या कर दिया था केजिया ने, उसको काट कर जो पिंक क्यूजन बना रही थी उसके अंदर डाल दिया था. सो रूम वर सर्च, सर्वेंट क्वेश्चंस, फाइनली मदर कम इनटू केजियास रूम. तो बहुत जगह पर ढूंढा गया, जो सर्वेंट्स थे उनको भी पूछा गया, और फाइनली केजिया की मदर केजिया के रूम में आए और उसको पूछा, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम. तो केजिया को आकर पूछा कि मुझे पता है कि तुमने ये पेपर नहीं देखे होंगे या फिर तुमने ये पेपर नहीं लिए होंगे जो हमारे रूम में पड़े थे. ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. तो उसने निर्दोषता से, बहुत ही आसानी से बोल दिया कि हाँ, मैंने तो उस पेपर्स को क्या किया, काट दिया और उसको मेरे सरप्राइज एक गिफ्ट बना रही थी उसमें स्टफ कर दिया. वॉट, स्क्रीम्ड मदर, बहुत गुस्से में आकर. Come straight down to the dining room this instant. जल्दी से इसी वक्त डाइनिंग रूम में आ जाओ. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. And she was dragged down, तो वो डर डर के नीचे आने लगी. Where father was pacing to and fro, hand behind his back. तो जहाँ पर उसके फादर हाथ पीछे रखकर पूरे रूम में चक्कर लगा रहे थे, वहां पर वो आ गई. सो वेल, ही सेड शार्पली. सो केजिया's फादर विथ फुल एंगर सेड हर दैट वेल, ओके. मदर एक्सप्लेन, तो मदर ने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि ये सब क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है. ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड. डिड यू डू दैट? नो फादर, शी विस्पर्ड. मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. See that the child's put to bed this instant. तो उसके फादर ने उस मदर को क्या किया, ऑर्डर दिया कि जाओ और देखो उसके रूम में वो किस चीज़ के अंदर इसने पेपर्स डाले हैं और इस लड़की को रूम में डाल दो. ओके. सो crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. So crying too much, बहुत ज़्यादा वो क्राई होने लगी यानी कि रोने लगी. सी ले इन द shadowed रूम वेच्ड वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. सो वो शैडो रूम के अंदर एक पड़ी थी, वहाँ पर क्या था, तो वॉचिंग द इवनिंग लाइट को देख रही थी जो कि रूम के अंदर क्या कर रही थी, एक लिटिल पैटर्न बना रही थी. सो देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड. ओके. सो फिर उसके पापा उस रूम के अंदर आते हैं विथ अ रूलर यानी कि डंडा लेकर. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. ओके. सो हर फादर टोल्ड हिम दैट he is want to beat her. Oh no, she screamed, hiding under the bedclothes. लेकिन वो मना करने लगी रोते रोते एंड बेड क्लोथ्स के अंदर चली गई यानी कि उसको ऊपर ढांक लिया. सो ही पुल्ड देम असाइड. उसके फादर ने वो जो कवर था जो भी उसको निकाल दिया. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. हाथ को आगे रखने को कहा. You must be taught once and for all all not to touch what does not belong to you. और उसके फादर ने उसको कहा कि तुमको ये सिखाना जरूरी है कि जो चीज़ तुम्हारे
काम की नहीं है उसको कभी टच नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे फादर, लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए थे। डाउन कम द रूल ऑन हर लिटिल पिंक फार्म्स, लेकिन तब तक तो उसके पापा ने उसके लिटिल पिंक फार्म यानी कि हाथ के ऊपर जोर से छड़ी जो लाठी थी वो मारी। सो वी स्टॉप हियर। I hope that you understood this story. Now we discuss more about this chapter, about the story in our next video. So till that, thank you so much. Jai Shri Swaminarayan.